सर, जन्म से लेके मरने तक हम लोग का जिंदगी में बहुत सारे फेजेस आते। हर एज में हम लोग का पसंद नापसंद बदल जाते, रिश्ते बदल जाते, मोहब्बतें बदल जाते, दोस्ती बदल जाते, प्रायोरिटी बदल जाते। लेकिन जन्म से मरने तक एक चीज नहीं बदलते, वो है भूख। और ये भूख जो लोग मिटाते हैं, वो किसान, उनके लिए सरकार क्या कर रहे, वो जानना बहुत जरूरी है। सर, 2-4 स्टेट है, उसमें 2-4 किसान है जिसके पक्का घर है, ट्रैक्टर है। लेकिन बाकी देश के किसान के पास ना घर है, ना ट्रैक्टर है, सिर्फ गरीबी है। ट्रस्ट में सर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनना चाहते, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, फिल्म एक्टर का बेटा फिल्म एक्टर। लेकिन किसान का बेटा क्यों किसान बनना चाहेंगे? हो सकते है उसका बाप दादा किसान है, बाप दादा समझाएंगे ये महान काम है। लेकिन बेटा बाप को ये नहीं पूछेंगे, अगर बाबा आपको पता है ये महान काम है, सरकार को क्यों नहीं पता है? जो महानता सरकार को दिखाना है वो क्यों नहीं दिखाते? क्यों सालों भर का मेहनत का टोमेटो, पोटैटो, ट्रक हम लोग रास्ते में फेंकते? तब महानता कहां जाते? If my state West Bengal can include its sharecroppers under West Bengal Kishak Bandhu schemes, therefore what stops Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi योजना include करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? ये remains a mystery as well, a pathetic decision. Sir, we need to be serious and concerned about the distress of farmers. Perhaps due to having such poor understanding on farmers' problems, in the budget PMFBY, the crop insurance scheme has got a cruel cut-off to 23%. PMFBY charges premium from the enrolled farmers. In West Bengal, the state-run Bangla Shosho Bima schemes is a fully state government-funded scheme, for which enrolled farmers need not pay any premium. Annually 6,000 crore खर्च होते हैं स्टेट के लिए। 109 लाख फार्मर्स एनरोल हुआ है नया, जो ममता बनर्जी के सरकार दे रहे। 18 से 60 तक अगर उसी एज में कोई किसान मर जाए, उनके लिए ममता बनर्जी 2 लाख करके देते हैं। सर, ममता बनर्जी के बहुत सारे स्कीम्स है, जिसमें एक लक्ष्मी भंडार, जो 2-4 स्टेट उसको फॉलो किया। अगर ये स्कीम भी सेंट्रल फॉलो करे, इसमें कोई बुराई है नहीं, कोई शर्म है नहीं, कोई ईगो है नहीं, कर सकते हैं। Bengal, sir. Are you Bengal? UP को आ रही हो? Bengal. They should be patient. I have more things. Sir. I was listening to the speaker from Bengal, sir. He said Bengal Virodhi budget. I want to address that, sir. Sir. Sir, Bengal MPs, sir, spoke about financial blockade. हाँ, यूपी आएगा। मैं आ रही हूँ, बैठिए, मैं आ रही हूँ, बैठिए, हाँ जी, सर, financial blockade. They charged us with financial blockade allegations. Like every other state, sir, PM Awas Yojana Gramin is being implemented in West Bengal since 2016-17. The government has released 25,798 crore as central share to the state since 2016-17. 25,798 crore, only central share. It's gone. However, complaints of irregularities, I will give you. Complaints of irregularities in the implementation of PM Awas Yojana Gramin, including a selection of ineligible households from Awas 2018 Awas Plus, removal of eligible households and branding violations were received. We are hearing this allegation
There have been similar complaints about Manrega. Ministry Rural Development is engaging with West Bengal and for a satisfactory reply. Sir, now I come to the specific data. It's ironical that Trinamool, which means grassroots, which means grassroots, Congress that prides itself on being rooted in the grassroots now symbolizes harassment and denial of rights to the common people in the grassroots. I'll give you examples for that. 25 lakh fake job cards in Manrega. Funds meant for people at the grassroots have been looted by the carders. 100 crore midday meal fraud. 100 crore midday meal fraud. Ration mafia thriving in the state on grassroots level. Ayushman Bharat was blocked and denied health care the poor living in the grassroots. 43% tap water coverage in Bengal as opposed to 74% national average. 74% national average, Bengal is at 43%. That's the average. Sir, important. Capital formation crashed from 6.7% in 2010 to 2.9% in the recent years. No jobs, no factories, no vision. That's Bengal for you, sir. Industrial powerhouse. Bengal was industrial powerhouse. 24% share when in 1947 during independence Bengal had 24% share in manufacturing. Today it has 3.5%, sir. Bengal's per capita income growth lags behind the national average. For the last 20 years, per capita income of Bengal lags behind the national average for last 20 years. It's ranked 23rd. In 21-22, it was 23rd among all states of India. Sir, Trinamool Congress has institutionalized corruption, gutted institutions, and Trinamool has become a byword for exploitation. Trinamool has become a byword for exploitation, sir. Now, can I then suggest, because budget, Bengal विरोधी budget बोला गया, मैं क्या पूछना चाहती हूँ अभी, तृणमूल विरोधी टीएमसी हो गया है क्या? तृणमूल विरोधी टीएमसी है, तृणमूल जनता विरोधी है. अरे